Hello students, welcome all of you to my YouTube channel Phase Quantum Classes. In this video, we will discuss phase space in statistical physics for B.Sc Part 3 Physics Honours course in lecture number 7. In classical mechanics, the state of a system of particles is represented by three position coordinates, say a small x, comma small y and a small z, and the state of motion of the system of particles is represented by three velocity coordinates, say Vx, Vy and Vz, or more conveniently three momentum coordinates, say Px, Py and Pz, that is a small px, small py and a small pz for each of the particles of the system. So the six-dimensional space for a single particle of a system of particles having six orthogonal coordinates or mutually perpendicular coordinates, three position coordinates, a small x, small y and a small z, and three momentum coordinates, say px, py and pz, is termed as phase space or mu space for a single particle of the system. And for a large number of particles of the system, that is for a system of a large number of particles having total 2f coordinates, that is f independent coordinates for position, that is q1, a small q1, small q2, a small q3, a small q4, a small q5, dot dot, and so on to qf, and f independent momentum coordinates, say a small p1, small p2, small p3, and so on pf, that is 2f total number of independent coordinates for a system of a large number of particles. It is called, this phase space is called tau space. क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से किसी एक पार्टिकल के पोजीशन, दैट इज अ स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट और एट एनी टाइम, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकल के पोजीशन को थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई एंड जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि उसी पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन को एट एनी इंस्टेंट टी, किसी टाइम टी पर सपोज किया जाए, या उसी इंस्टेंट पर उसी क्षण थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, दैट इज px, a small px, small py and a small pz, अधिक सुविधा के लिए, मोर कन्वेनियंटली वैसे उस पार्टिकल के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से किसी पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री वेलोसिटी कंपोनेंट्स Vx, Vy एंड Vz की जरूरत होती है। लेकिन अधिक सुविधा के लिए हम किसी पार्टिकुलर टाइम पर
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से किसी एक पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी के बजाय 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स के बजाय 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को चूज करना अधिक बेहतर होता है। तो इस प्रकार 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी एक्स पी वाई एंड पी जेड का जो सेट है दैट इज हैविंग 6 ऑर्थोगोनल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स। के सेट को दैट इज 6 डायमेंशनल स्पेस को टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, इसे फेज स्पेस कहा जाता है एक सिंगल पार्टिकल के लिए, और म्यू स्पेस कहा जाता है। लेकिन यदि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बहुत से पार्टिकल्स हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सपोज किया जाए कि उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एफ इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स p1 स्मॉल q1 स्मॉल q2 स्मॉल q3 एंड सो ऑन टू qf की जरूरत होती है, जबकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए अनदर स्मॉल एफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स से p1, p2, p3 एंड सो ऑन pf की जरूरत होती है। इस प्रकार फॉर ए सिस्टम ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स द टोटल 2f डायमेंशनल स्पेस इज known as phase space or tau space for the system of a large number of particles. So this is the phase space. फेज स्पेस को हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत से फेज पॉइंट्स के रूप में और बहुत से सेल्स के रूप में, जिसे फेज सेल्स कहा जाता है। इस सेल का जो साइड होगा उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 ऑर्थोगोनल साइड्स के द्वारा। इस सेल के साइड्स को 6 ऑर्थोगोनल साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, dx, dy, dz, dpx, dpy एंड dpz। So, volume element of each cell of the phase space is represented by d tau is equal to dx into dy into dz into dpx into dpy into dpz. Now, write down. In classical mechanics, the state of position of each of the particles of a system of particles is represented by 3 mutually perpendicular Cartesian coordinates, 3 orthogonal or mutually perpendicular Cartesian coordinates, say small x, small y and small z, and
the state of motion of that particle at any instant and the state of motion of that particle at any instant किसी टाइम पर सपोज किया जाए टाइम t है मोशन ऑफ दैट पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट is described by or represented by described by three velocity components, say Vx, Vy and Vz, or more conveniently by three momentum coordinates, say Px, Py and Pz. तो उस पार्टिकल के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से किसी भी पार्टिकल किसी एक पार्टिकल के पोजीशन के स्टेट को थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि उसी पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन को किसी पार्टिकुलर टाइम टी पर रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री वेलोसिटी कंपोनेंट्स Vx, Vy एंड Vz की जरूरत होती है। अधिक सुविधा के लिए हम उसे थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स Px, Py एंड Pz द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है किसी पार्टिकल के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से किसी पार्टिकल के किसी एक पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन को किसी टाइम टी पर सपोज किया जाए स्मॉल टाइम टी पर रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चाहिए। उस पार्टिकल के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में से किसी पार्टिकल के पोजीशन को किसी पार्टिकुलर टाइम टी पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स, वाई एंड जेड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, जबकि उसी पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन को एट एनी इंस्टेंट टी और उसी टाइम टी पर रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स से Px, Py एंड Pz की भी जरूरत होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के टोटल 6 ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स का सेट फॉर्म करता है 6 डायमेंशनल स्पेस को फॉर ए सिंगल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इसे ही इस कंबाइंड 6 डायमेंशनल स्पेस को ही फॉर ए सिंगल पार्टिकल हम फेज स्पेस और म्यू स्पेस कहते हैं फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एंड फॉर ए सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस फेज स्पेस दैट इज हैविंग we can use we have to need 2f independent total 2f independent coordinates की जरूरत पड़ सकती है जब किसी सिस्टम में बहुत से पार्टिकल्स हैं, तो उस सिचुएशन में तो टोटल 2f इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जिसमें स्मॉल एफ इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड स्मॉल एफ इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड स्मॉल एफ इंडिपेंडेंट मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये टोटल कंबाइंड 2f डायमेंशनल जो स्पेस होगा फॉर ए सिस्टम ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इस फेज स्पेस को हम टॉ स्पेस कहते हैं। It is known as tau space, and for a single particle of a system of particles, the 6-dimensional space having 6 orthogonal coordinates x, y, z and Px, Py and Pz is termed as or is known as phase space or mu space. So further write down. I am repeating again. In classical mechanics, the state of position of each of the particles
of a system of particles at any instant is represented by the three mutually perpendicular Cartesian coordinates, a small x, comma small y, and a small z, and the state of motion of that particle at that instant or at the same instant is described by the three velocity components of the particle of that particle, or more conveniently three momentum coordinates, say px, a small px, comma small py, and a small pz. So and the state of motion of that particle at any instant or at any time, say t, a small t, is described by the three velocity components, or more conveniently three velocity components, or more conveniently three momentum coordinates, by the three momentum coordinates, say px, a small px, comma small py, and a small pz, for each of the particles of a system of particles. Thus, the combined six-dimensional a space having three position coordinates, having three Cartesian coordinates, we can say position coordinates also, because they specify the position of a particle in the space. So three Cartesian coordinates or three position coordinates, x, y, and z, x, y, and z, and three momentum coordinates, px, py, and pz. So the six-dimensional space having three Cartesian coordinates or position coordinates, a small x, a small y, and a small z, and three momentum coordinates, px, a small px, comma small py, and a small pz, that is six orthogonal coordinates. These coordinates are mutually perpendicular to each other. That is, in bracket, a set of six orthogonal coordinates. Six-dimensional space having a set of six orthogonal mutually perpendicular coordinates, x, y, z, and px, py, and pz. Six orthogonal coordinates is termed as phase space or mu space for a single particle of the system. For a single particle of the system of particles or of the system. तो इसे ही फेज स्पेस कहा जाता है. That is six-dimensional. That is the six-dimensional space having six orthogonal coordinates: a small x, a small y, a small z,
Px, Py and Pz is termed as phase space or mu space for a single particle of the system. But if the system contains a large number of particles such that the state of system is represented by a small f independent position coordinates, say q1, a small q1, a small q2, a small q3 and so on, qf, and a small f momentum coordinates, a small p1, a small p2, a small p3 and so on, a small pf, that is total 2f dimensional space for a system of a large number of particles is also called phase space or tau space. So further write down for a system of a large number of particles, for a system of large number of particles having total 2f, that is f independent position having f, a small f independent position coordinates and a small f momentum coordinates, that is 2f, total 2f independent coordinates, जिसमें कि स्मॉल एफ इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल p1, स्मॉल p2, स्मॉल p3 एंड सो ऑन, स्मॉल pf, स्मॉल p देकर सफिक्स में f द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं f इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को, एंड f इंडिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल q1, p के जगह q यहां रिप्लेस कर देंगे, q1, q2, q3 एंड सो ऑन, qf एंड f इंडिपेंडेंट मोमेंटम coordinates, say a small p1, a small p2, a small p3 and so on, a small pf. So for a system of a large number of particles having total 2f independent coordinates, a small f independent position coordinates, that is q1, q2, q3 and qf, and a small f independent momentum coordinates, say p1, a small p1, a small p2, a small p3 and so on, pf, is called tau space. This phase space is known as tau space for a system of a large number of particles. This phase space is called tau space. And for a single particle, 6-dimensional space for a single particle having 6 orthogonal coordinates, a small x, a small y, a small z, and px, py and pz is termed as mu space. This phase space is termed as mu space. So this is the difference between mu space and tau space. Now phase space is divided into various cells, and those cells are known as phase cells, having each cell having sides dx, dy, dz and dpx, dpy and dz.
So volume element of each cell is represented by d tau is equal to dx into dy into dz into dpx into dpy and into dpz. So next, write down. Phase space is divided into various cells called, those cells are known as phase cells, are called phase cells. Each phase cell or each cell having sites dx, dy, dz, dpx, dpy and dpz. Volume element of each cell or each phase cell in phase space is represented by d tau. Volume element of each cell of the phase space is represented by d tau equals to dx into dy into dz into dpx into dpy into dpz. In phase space, there are various phase points, and phase point per unit volume is called phase density. Now this video is completed. इस वीडियो में इतना ही. Thanks all of you for watching my YouTube channel, B.Sc Quantum Classes.